Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering all the national news items for the month of February 2025, which are important for the upcoming Cbse recruitment examination. I'll just be going through the main headlines, okay, just to show you which are the important news items. First one, agriculture and environment का topic से PM Asha extension, government approves continuation of integrated scheme during the 15th Finance Commission cycle up to 2025-26 to ensure remunerative prices. ठीक है, और फिर PM किसान का इंस्टॉलमेंट भेज दिया है. इन सब में ओनली द स्कीम इज इम्पोर्टेंट. ऑलराइट, इसके बारे में द न्यूज आइटम गिवन इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट. PM आशा का मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ. पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. ठीक है, एंड इट इज बेसिकली अ प्राइस अश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स. ठीक है, पीएम किसान में क्या वो ही दिया है. उसके बाद में एक्सपोर्ट बूस्ट के लिए क्या दिया है, न्यू हार्मोनाइज्ड सिस्टम. New harmonized system codes introduced for GI recognized rice varieties, red rice, black rice and काला नमक राइस. ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीएम किसान के बारे में देख लेते हैं. बेसिकली इट इज़ 6,000 रुपीज़ देते हैं फार्मर्स को, है ना. इसमें क्या रहता है, दिस इज इनकम सपोर्ट स्कीम फॉर फार्मर्स. ठीक है, और harmonized system codes, try to remember this phrase. And GI recognized rice, तीन राइस वेराइटीज़ के लिए है, रेड राइस, ब्लैक राइस एंड काला नमक राइस. नेक्स्ट, 4 sites have been added to the Ramsar list. So now total there are 89 sites under the Ramsar lists. The 4 sites are Sakara Kotai, Therthangal, Khecholo Palri, Sikkim, Uthwa Lake of Jharkhand. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. इससे देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट द क्वेश्चन में बी आस्क्ड. तो तमिलनाडु से देर आर 2 lakes which have been added, 2 wetlands. The first one is Sakarakotai and the second one is Therthangal. सिक्किम से we have Khechio Palri and Jharkhand से उधवा लेक. नेक्स्ट, जियोस्पेशियल सर्वे पे है. लॉन्च ऑफ नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, नक्शा बोलते हैं, इन 152 बॉडीज अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज. तो इसको नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नक्शा. नेक्स्ट, nationwide initiative launched under the theme Jal Laye Dhan Dhanya to boost public participation in watershed development. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, watershed यात्रा. Watershed यात्रा is basically an initiative launched under the theme Jal Laye Dhan Dhanya, मतलब water brings wealth, है ना. जल लाए धन धान्य टू बूस्ट public participation in watershed development. Then we have MIS revision, market intervention scheme है. तो guidelines revised for perishable crops like tomato, onion, potato to prevent distressed sales where MSP is not applicable. तो क्या है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है. उसके जो गाइडलाइंस है दे हैव बीन रिवाइज्ड to prevent distress sales. तो this is not very important. Next, soil health card का क्या दिया है, the scheme has completed a decade, so automatically this scheme becomes important and you'll have to read this for the examination. ठीक है. नेक्स्ट है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 organized by Indian Council of Agricultural Research IARI in New Delhi.
The theme was उन्नत कृषि विकसित भारत. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला, और थीम था उन्नत कृषि विकसित भारत. एंड दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है एशियन फिशरीज फोरम. 14th Asian Fisheries and Aquaculture Forum was held in New Delhi. The theme was Greening the Blue Growth in Asia Pacific. ठीक है, नॉट वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट थीम इसका याद कर लेना. दिस में बी आस्क्ड ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक. ठीक है. नेक्स्ट एविएशन से उड़ान 5.5. नेक्स्ट फेज ऑफ द उड़े देश का आम नागरिक स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू एनहांस रीजनल एयर कनेक्टिविटी. Digital pilots. Electronic personnel license has been launched. India becomes the second country globally after China to implement this ICAO approved system. Electronic personnel license has been launched, and India is the second country after China to implement this. और उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है. यू हैव टू रीड अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ इन द न्यूज़ राइट नाउ. ठीक है, तो ये per se news item is not important, but the scheme mentioned here is important. Next, hydrogen first. Tata Steel becomes India's first company to develop pipes for hydrogen transportation. ठीक है. ठीक है. Next, Swarail Super App, launched by Indian Railways as a one-stop solution for seamless railway services. So the name of this app is Swarail Super App, and it has been launched by CRIS as a one-stop solution for railway services. CRIS का full form होता है Center for Railway Information System. ठीक है, this is important. Center for Railway Information Systems. Next, logistics efficiency. Volvo Trucks introduces India's first road train solution for high volume logistics. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. पीएम विकास, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, फ्लैगशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, merging सीखो और कमाओ एंड नई मंजिल, फोकसिंग ऑन वुमेन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सिंस दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना स्कीम. This is basically aimed at uplifting the minority. ठीक है, and it has merged two schemes, सीखो और कमाओ and नई मंजिल, which were basically schemes for minority women, and they were focused on women as well as school dropouts. ठीक है. नेक्स्ट, सफाई कर्मचारी के लिए द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 3-year tenure extension for the National Commission for सफाई कर्मचारीज. ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, GEM, Government E-Marketplace commemorated 6 years of the स्वायत्त initiative. ठीक है, स्वायत्त, इसमें स्वायत्त scheme is basically a government initiative which was launched in 2019 to promote public procurement by simplifying the market access for startups. ये वही है बस. It is basically aimed at promoting public procurement. स्वायत्त स्कीम. स्कीम का फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ advantage through e-transactions. Startups, women
and youth advantage through e-transactions. ठीक है. फिर पेंशन अदालत. 12th nationwide pension adalat was held in New Delhi to resolve grievances. Next, regulatory shift. Supreme Court has directed the National Commission for Homeopathy chairperson to step down regarding appointment compliance. ठीक है. Next, we have administrative reforms. IIAS annual conference held on next generation administrative reforms. ये भी काम का नहीं है इतना. हम्म, ये भी इतना काम का नहीं है. ठीक है. Next, India Energy Week 2025. The third edition of this week was held at Yashobhumi Dwarka, the world's second largest energy event. बस इसको एक बार देख लेंगे. I do not think that it is very important. Next, Asia Economic Dialogue. 9th edition was held in Pune, and the theme was economic resilience and resurgence in an era of fragmentation. ठीक है. Next है UNSC 1540 training. So the first ever capacity building program on United Nations Security Council Resolution 1540, that is strategic trade controls, was held at NACIN Palasamudram. This is an important news item. So NACIN का full form होता है National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. ठीक है. यहाँ लिख देती हूँ मैं. National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. यहाँ पे UNSC का resolution number 1540, which is aimed at strategic trade control, उसका first capacity building program was held. Next, United Nations Under Secretary General Jean-Pierre Lacroix visits for the Women in Peacekeeping Conference. अच्छा. So he had visited India for this Women in Peacekeeping Conference. तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट है ब्रिक्स यूथ. देखो, दिस वॉज हेल्ड एट, आई थिंक इट वॉज हेल्ड एट न्यू दिल्ली, and Indian Army through the Center for United Nations Peacekeeping India had hosted this 2-day conference. The title of this conference was Conference on Women Peacekeepers from the Global South, and this was held at Manekshaw Center, New Delhi. ठीक है. ब्रिक्स यूथ का देख लेते हैं. यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड, and the theme was youth entrepreneurship for sustainable growth. Next, देख लेते हैं waves summit. India to host the host first World Audio Visual Entertainment Summit in Mumbai to position the country as a global media hub. Next, Seoul Conclave. Prime Minister Modi has inaugurated the first edition of School of Ultimate Leadership at Bharat Mandapam. Bhutan PM Shering Tobgay was also a guest of honor here. So this becomes very important since Prime Minister had inaugurated this. ठीक है. इसको try to just check कि एक सेकेंड, I'll just check Seoul Conclave का full form. तो ये बस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है बेसिकली एक, एज द नेम सजेस्ट्स.
ठीक है, and this was held at Bharat Mandapam, and as it has been written here, and the Bhutan Prime Minister was the guest of honor here. This is also important because this was also mentioned by Prime Minister Modi. So India, ये अभी हुआ था, है ना? This is an old news, therefore इसमें दिया नहीं है. India to host the first World Audiovisual Entertainment Summit in Mumbai to position the country as a global media hub. Next, semiconductor investment. LAM Research US-based signs MOU with Karnataka to invest 10,000 crores in Whitefield, Bengaluru. Not very important. From the exam point of view, वैसे important है. Next, research के लिए JC Bose grant. अनुसंधान National Research Foundation has launched grant support for senior scientists in cutting edge research. इसका नाम क्या है? JC Bose grant. तो ये इम्पोर्टेंट है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर आता है ये ग्रांट. नेक्स्ट, इनोवेट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड माई गवर्नमेंट हैकेथॉन हैज लॉन्च दिस. ठीक है, डेटा ड्रिवन इंसाइट्स फॉर विकसित भारत. तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है. इनोवेट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स. नेक्स्ट, हैकेथॉन टाइप है, and the theme for this hackathon is data driven insights for Vikisit Bharat. Next, gaming talent क्या है? Bharat Tech Triumph program was launched to showcase gaming talent under Create in India. So नाम क्या है? Bharat Technology Triumph program. Next, परीक्षा पे चर्चा. So the 8th edition was held on February 10th, and it is an annual event hosted by Prime Minister Modi. Next, Parliament translation. Translation services have been extended to 6 new languages in the Parliament: Bodo, Dogri, Maithili, Manipuri, Urdu, and Sanskrit as well. Next है Manuscripts Mission. National Mission for Manuscripts to be made autonomous has documented over 5 million manuscripts. So this is very important. So you need to read about this National Manuscript Mission. Next, Council for Leather Exports has organized the Delhi International Leather Expo. This is not very important for the examination. Next, Heritage Water Bodies. Bisleri and ASI partnership under Adopt a Heritage 2 and Nai Umeed to restore heritage water bodies. ठीक है, तो ये अच्छा है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिस्लरीज के साथ पार्टनरशिप करा है अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम टू restore heritage water bodies. So that is all for this video. Thank you. Kindly subscribe to my channel if you found this video helpful, and you can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.